Good morning, everyone. It's now 6 o'clock in the morning and we are still in the tent. Let me show you some beautiful thing outside of this tent. 3, 2, 1. See, that's the beauty. We are sleeping in between these beautiful mountains. Wow. Third day of trekking. We are in Dhanteras Thatch. We set up our camp yesterday. This is the campsite. We are making our coffee. So just hot water and some instant coffee powder And milk powder. Milk powder. This is like hot coffee. Nice coffee. Good morning, everyone, once again. Coffee is good and hot as well. What a beautiful morning. Wow. Coffee with white snow mountain and green mountain as well. Check this out of this side also. What shows temperature as 0 degree. -1, no? Earlier it was -1. You can see that that's the -1 at the bottom. That says that is the lowest temperature. So that's morning, not the night. Night maybe it's plunged below minus, but morning, this is what, 7 o'clock or 8 o'clock, sun is up. Still the temperature is 0 and -1. So cold. So look at how Navi is sleeping. So yesterday Navi was sleeping close to our tent, literally just sleeping on the side of our tent, on top of our tent. You can see that side. मेरे को ना ये इधर उधर जाता रहता है, ठीक है? इसके गले का ये है ना, वो लग के वो कट ना जाए, वो उसके अंदर से आता है. ऐसे साइड से नहीं आता, ऐसे आता है. तो मैं भी सो गया था अच्छे से. जिम में सो जा. Alright, we are just waiting for sun to come up. Just lighting the other peaks, not in these peaks. So once sun is up, we'll probably pack our tents. Look at that tents. It's like totally mess. So we have to pack this. We have to pack the sleeping bags, sleeping mats, and have to prepare the breakfast. Then we'll start to lower waterfall. So we'll start a bit late. Inside tent it is 4 degrees. I think it's probably 5 degrees Celsius. पता नहीं रेक्स क्या कर रहा है. पहली बार ट्राई कर रहे हैं हम लोग पोहा और मैगी का सुपर मिक्स. हाँ, सुपर मिक्स. होप अच्छा ही होगा. ये बढ़िया. It smells good. Smells really good. So how is the new dish? Mix of poha and It's very nice, very nice. Maggi? Yeah, super. And after having, how is the Josh? How's the Josh? Boys, how is the Josh? This is the view from our camp.
भी वेस्ट नहीं रहना चाहिए, और जितना भी वेस्ट हम कैरी करना था कैरी कर लिया, और जितना कागज़ वाले वो जला दिए। सो दिस इज़ यू शुड लर्न। सिरवास का वेस्टेज है हमारा, जो टिश्यूज़ है, कबाड़ था वो हमने यहाँ पे जला दिया, पूरा साफ़ कर लिया है। पूरा कैंपिंग साइट एकदम ओके है, कोई भी रैपर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। जो रैपर था वो सब भाई लोग बेंगलोर लेके जा रहे हैं, और टिश्यूज़ हमने जला दिया है। और जितने कागज़ के आइटम, कागज़ जो भी था, मतलब कागज़ प्रॉपरली जो हमने यहाँ पे सब जला के उस पर आग लगा दिया है। बाकी सब कैंपिंग क्लीन है, बिल्कुल क्लीन है, साफ़ कर दिया है। So guys, if you are coming here, so do this the same. So guys, if you are going somewhere, don't litter it. जितना भी हो सकता है कचरा अपने साथ ले जाओ, और else जितने भी कागज़ जैसे हैं जला के वेस्ट, मतलब उसको वो क्लीन कर दो प्लेस को, so that आपके बाद कोई आए तो उनको भी क्लीन एनवायरनमेंट मिले। गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द थर्ड डे ऑफ द ट्रैक। वी हैव टू अगेन go back from this stage and cross that river. Again the climate is changing too badly. Now I understand why people are starting so early, like 4 o'clock, 5 o'clock in the morning. Even we saw here clear sky, everything all good, but as soon as the clock ticks 11, the climate is going very drastically changing. This is kind of small snow track. We'll get more snow on the way. शिव भाई ने जो स्टिक पकड़ा है, अपना स्टिक बांध दिया, वो स्टिक पकड़ा है हमारा टेंट को पिच करने के लिए। सभी ने एक एक पकड़ा है। भाई तो ये जो स्टिक है, ये जो स्टिक का दिख रहा है ना, पतले पतले लेयर्स पेपर टाइप के, इसी में ही पुराने ज़माने में लोग लिखा पढ़ी करते थे। और याद होगा जो हमारी जन्म पत्री इसी में ही लिखी हुई थी। अब भी लिखते हैं पंडित लोग। हाँ, अभी भी लिखते हैं पंडित लोग, पतली सी पेज कागज़ की तरह। हाँ, ये भोजपत्र का, भोजपत्र इसको बोलते हैं। प्लास्टिक के काम में यूज़ कर रहे हैं। हाँ, टेंट को गाड़ने के लिए, मतलब होल्ड करने के लिए। ज़्यादा खराब होता है तो इसलिए हवा ज़्यादा चलती है, हवा तो टेंट को होल्ड करके रखेगा। Navi is also following us. I don't know, somehow he survived yesterday's cold night. He was sleeping very close to our tent to get some warmthness from Riaz. He was literally slept with Riaz, yesterday. यहाँ थोड़ा स्टिफ है, डिसेंडिंग और स्लिपरी भी, so we have to walk side by side. Carefully, walk side by side.
Not like that, like this. Now it's like fresh snow, it's easy, but you have to anyways walk side by side. Fresh snow. Yeah, this is fresh snow. But the left hand side is snow. Yeah. Walk side, huh? That's what. Let's go. There. That's the trail. We'll go like that. Just goes up. So, with more adventurous day ahead. Altitude is really making it difficult to trek with this luggage. Everybody's tired. Just out from there over there on that cliff. Just crossed it to that mountain, that slope. We crossed it to this mountain. Then we walked along this trail covered with snow. Just reached here. Barely a kilometer. Everyone is tired. Fucking tired. Everyone's backpack is at least 13 kg or 14 kg, and our guide is carrying close to 20 kg. Cylinder, everything. Salute to him. Frozen ice. You can see water going inside the frozen ice. It's very slippery. This is the proper rest point, no? So we drank electrolyte water and brownie भी थोड़ा rest कर ली. Now we are moving ahead towards that point. That is the waterfall, if you can see from here. Yeah. हम लोग लोअर वाटरफॉल की तरफ बढ़ रहे हैं. This you can see the trail. Have to go to that plateau. Need to go carefully because left side you never know. It's a snow. You'll go down. So need to follow the footstep. And if possible, if you have a stick, better fix the stick and check, then go. This is the first snow bridge we see, but it was broken.
go, boys! कहाँ से हम लोग चल के आ रहे हैं? ये हाइट में रीच कर गए। स्नो माउंटेन्स। एनर्जी नहीं है किसी के पास। फर्स्ट डे ट्रैक में हम लोग आगे 4 किलोमीटर चले थे जिसमें टू जाखा। That too takes some around 5 hours or 6 hours, maybe more. Second day we trek around 11.5 kilometer. Then the third day we have covered around 3 kilometers, more than 3 kilometers. Over 3 is more to lower waterfall. बजे तक तो पूरा ब्लू स्काई था। उसके बाद थोड़े से बादल आना स्टार्ट हुए। 11-12 बजे के बाद पूरा ऐसा हल्के यहाँ पे बादल आ रहे थे इतने से। हाँ वही थोड़ा पानी दो। शाम होते होते भी हो सकता है ऐसे क्लाउडी रहता है। Oh my god. Open the clip. ये clip है इसको स्नो पे hold it. We reached halfway. That's the lower waterfall and the above one. See how the climate is changing so drastically. Some more way to go. Then we'll pitch our tent because you can't say anytime the weather will go wrong. We have covered all the way back. We are now in these mountains. I don't know how, but we'll try to climb this mountain and cross. There's a left we need to take, and beside that we have Rupin Pass. Let's see how much we can complete. Half of the waterfall is frozen and half still going down. Far side. This is one of the main attractions of Rupin. Shiv is trying to pitch our tent. Hopefully we have covered 5 to 6 kilometers. This is lower waterfall camping site. We'll see, we'll be staying tonight here and we'll decide whether we can able to go or not. Hope for the best. ये कौन सा है? नीचे वाला है? लोअर है ना, ये नीचे लोअर वाटरफॉल है। ये दोनों लोअर में आ जाएंगे। दोनों लोअर में। ये जो अपर वाला ना जो ऊपर दिख रहा है, हाँ। ये है छोटा सा। हाँ, ये छोटा नहीं, बहुत बड़ा वाला। लंबी है। ये अपर है। Okay. इसके पीछे जाके कैंप साइड लगता है। Okay. इसके ऊपर जाके मतलब इतना यहाँ से लोअर तक ना इतना अंदर जाके कैंप लगता है। अच्छा। पानी अंदर है ना यहाँ। ये पानी यूँ साइड से आ रहा है यूँ। बहुत ही मस्त कैंप साइट है ना वो। हाँ। सेकंड वाला। कैंप यहाँ पे लगता है या फिर कैंप साइड सीधा ऊपर लगता है। बीच में कोई कैंपिंग नहीं है। कितना लोअर का बीच में भी नहीं है। हाँ नहीं। कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? ये लोअर है, लोअर से अपर तक कितना किलोमीटर? यहाँ से जाएगा 3-3.5 किलोमीटर। 4 जाएगा पूरा पीछे कैंप तक। 4 किलोमीटर। कितना टाइम लगेगा? वही पूछ रहा है। यहाँ से सीधा पीछे लहर के जस्ट पास में। अच्छा। यहाँ से सीधा ऊपर। हाँ। ऊपर से पार वो सीधा दिख रहा है ना, पार फिर पार से फिर ऐसा स्लिप पर बिल्कुल ऐसा ऊपर। ओके। जो अपर है ना, इसके यूँ इस साइड को। अच्छा। इसके यूँ ऐसी। अच्छा, फिर राइट। अच्छा। अगर अपर तक पहुँच गया तो देखो वो कल सुबह। नहीं रूपिन ये तो कुछ नहीं है यार, ये तो अभी स्टार्ट है यहाँ से। अच्छा।
ये अभी ये कुछ नहीं था, यहाँ तक नॉर्मल लोग आ जाते हैं। अच्छा। कई लोगों को डिसेंड करते हैं वापस। हम चलने में थोड़ा लेजी है, कुछ प्रॉब्लम आ गया हो, कुछ हम लोग के जैसे है ना, तो यहाँ से डिसेंड करते हैं लोग। अब यही कहना चाहते हैं हम लोग के जैसे लेजी बंदे। अच्छा हाँ, वही प्रॉब्लम है, ये वजन ज़्यादा है ना, इसीलिए नहीं चल पा रहे। अगर दो तीन जगह में ऐसा, एक जगह तो चलो नॉर्मल है, कोई सीन नहीं, वहाँ हो जाएगा शायद। दो जगह में इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है कि जो ये पानी है ना, ये पूरा आइस जमता पानी के ऊपर से निकल, इस तरह से हो जाता है ऊपर, जैसे ये है ना, जम गया है वाटरफॉल, इस तरह से निकलना पड़ता है। रुकिन के थोड़ा पहले हाँ, वो जगह बहुत ऐसा है। अच्छा, नीचे ऐसा रॉकी है, जितना ऊपर चढ़ोगे ना ऐसा रॉकी आएगा ऊपर। ओके ओके। ये सारा पूरा रॉकी आ जाएगा ऊपर, तो नीचे को देखोगे तो खाई बहुत गहरी इस तरह, ऐसा खाई दिखाई देगा। तो आजकल पूरा ऊपर को तो पूरा जम गया है, ऊपर से ऊपर पूरा जम गया है। तो ऊपर से जाना ही कल See, one of our guy is moisturizing himself and showing his sexy leg. Navi, come inside. Come. आ जाओ, कम कुड़का सूप उड़का चिकन का स्मेल मिल रहा है। तो ये भाई लोग चिकन सूप पी रहे हैं गर्मा गर्म। स्नो भी हो रहा है बाहर, बहुत ठंडी है, बहुत ज़्यादा। बाहर जाने को इतना मस्त सूप बना के दिया, मज़ा आ गया। थैंक यू भैया। ये हम टेंट के अंदर अपना सूप पी रहे हैं, गर्मा गर्म चिकन सूप, और मैं अपना टमाटो सूप पी रहा हूँ। बेस्ट है, क्या मस्त है यार। The mountains disappeared. क्या मस्त नज़ारा है रूपिन का। वाव, whoa, it's awesome. Snowfall all around, and we are in between the valley. Rupin River is running, and Riaz मज़ा ले रहे हो। ये देखो हमारे टेंट में क्या हुआ। अभी कितना बचा होगा वर्ष टाइम ना?
I think around 3 p.m. Only 3 p.m. and see the weather and see the snow. Oh my god. कल भी स्नो था लेकिन मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया बिकॉज मेरा बैटरी डेड हो गया था. अब नाउ आई हैव बैटरी एज वेल एज मेमोरी कार्ड. यार ये ब्राउन ही तो बर्फ़ में सो रहा है, वो भी कोजी होके सो रहा है. भाई व्हाट इज दिस? ये एडिशनल लेयर है, उससे क्या होगा? उससे स्नो अंदर नहीं जाएगा. ओह टैलेंटेड बंदा है ये तो. कहाँ से सीखा है? मुझे लगता है ये माउंट एवरेस्ट एक्सपेडिशन करके आया है. दैट्स व्हाई इंडियन माउंटेनियरिंग. that's why so much of experience on these things. I guess there is small rainbow, now it's gone. It was there before and the clear weather is coming for us. Hopefully that should be, my guess should go right. But while coming here you must have seen this is all brown and all. Now it's totally white. Everywhere white and white. We are packed inside this tent. This is what looked like when we were staying. Can you see the lower waterfall, the upper waterfall, and the peak? That is not exactly the Rupin. I guess it's now cloudy. Hopefully you can see, but I can see in my naked eyes. This is the Rupin river running near to us. That's a clear sky and this is the bad weather. Oh God, give this part, not this part. Soon we just want to enjoy here and climb that peak. Third campsite. There is low waterfall. Now look at that view. Wow, so majestic, so majestic. Just rainfall for 15 minutes and look at the view, man. So freezing cold, even I'm not able to take my hands out of my gloves just to record this. That's upper waterfall. That's upper waterfall. Probably we'll be going tomorrow. This is where we are enjoying our coffee. See, it's beautiful to have a coffee with friend. It's 5:30 in the evening. शुरू किसी से भी कर सकते हैं ना. हाँ नहीं शुरू सिर्फ स्पेड इस. तो हमारा डिनर रेडी हो रहा है. ये खिचड़ी. ओह वाव, क्या मस्त पक्के हुआ है. हल्दी, नमक और प्याज, मस्टर्ड ऑयल, नमक. ओह इतना मज़ेदार टेंट में हो रहा है. वहाँ से जेपी आ रहा है, दूसरे नेबर हमारे. और हेलो, कम टू योर होम, डोंट स्टे इन योर नेबर्स होम. बाहर पूरा बर्फ गिरा, बर्फ, वो देख रहे हो, बर्फ, फुल बर्फ गिरा हुआ है. आ जाओ.
देख के ले लो। हो गया, नहीं हुआ ना? पता नहीं। डिनर सर्व हो रहा है, ये गर्मा गरम खिचड़ी फॉर टुडेज डिनर। आ जाओ, डिनर तो हो गया, अपना अपना प्लेट लाओ। इतना सारा सब खाएंगे। वो ब्राउनी भी है ना, ब्राउनी भी है, ब्राउनी भी खाएगा। चलो हम लोग डिनर खाते हैं। हाउ इज इट जिपी? It's good. After the start of the trek, first time we're having rice. Yeah, and the dal. Yeah. So like earlier to that we are only having that Ready to cook items like poha or Maggi. semai. So this is how we clean our utensil after having our dinner. Done. अभी टिश्यू पेपर में एक सेकेंड, having some tissue paper with me. इसको टिश्यू पेपर में पोंछ देना है। ऑल क्लीन, कल के खाने के लिए रेडी। दैट्स ऑल। थैंक यू। पूरा बर्फ गिरा हुआ है। ब्राउनी के लिए खाना, ब्राउनी पेट भर के खा लो। उसको उतना होगा तो, नहीं तो और दे दीजिए, हमारे पास तो है। अच्छा थोड़ा ठंडा हो जाने दो, फिर खाएगा। ब्राउनी के लिए एक पत्थर साफ किया गया, बर्फ से ढका हुआ पत्थर, फिर ब्राउनी खा रहा है। पूरा चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, जहाँ तक आंख जा रहा है। गुड बॉय। हाँ आ रहे हैं। ओके ब्राउनी, गुड नाइट, अच्छे से सो जाना। ब्राउनी तो अंधेरे में भी खा लेगा ना? हाँ खा लेगा। ठीक है ब्राउनी, हम जा रहे हैं सोने के लिए। काफ़ी अंधेरा है। लेट्स गो इनसाइड। होल्ड इट। पानी पानी पानी। करते हैं। So our dinner is over. Now time to sleep. This is my sleeping bag. Let me zip it. This is what our sleeping bag. वो लूज करना। Let me go inside. ये पकड़ना। This is what I'm doing inside the sleeping bag. Fully cozy. All set. All set. We can catch a pillar now. So guys, good night. This is our day of trekking over, and we camped well, had our dinner, and going inside the sleeping bag. All good, all set. Outside it's snowing. Time is now 10:07. Time is 10:07. Yeah. Okay, we are It's sleeping little late. It's little late for here, Yeah. but not in We Bangalore. slept at 9. Yeah. So today we have played cards, so that's why it became late. Anyways,
Outside the tent, it's totally wild, totally white out everywhere. I'll show you tomorrow morning as well how it is. Anyways, good night. See you tomorrow. Good night, neighbors. Good night. See you tomorrow. Bye bye. इसके अंदर जाएगा ये।